Okay. So, hi, very good evening, everyone. I'm audible to you all. If yes, please drop yes in the chat box. You can drop me the message to me directly. Okay, I have got multiple yeses from Manu. Dell is also there. Again, you came with the Dell name. Now, okay. Yes, Nishu. Okay, Prableen. That's really great to see all of you once again for the session and on the time itself, right? Yeah. Yes, Omkar. Okay. So, how are you all, everyone? How are you all? Okay, fine, sir. Okay, that's great. Just allow me for a couple of minutes to let me set up the stuffs and then we'll begin, right? Okay, yes, now we can start with, right? Yeah. So, very good evening, everyone. Hope you all are doing great today. And so, your energy level is also good, right? So, because today we are going one level deeper, we can say, into the machine learning. So before we start, I want to quickly connect with you all, right? So from which city you all are joining today? Just type in the chat box itself. Okay. Omkar is from Mumbai. Shruti is from Pune. Nice, nice. Kurukshetra, Haryana, Hyderabad, Telangana, Maharashtra. That's amazing. Yeah, right. So that was nice that we have people from everywhere, right? So on a scale of, I would like to let you, I would like to know that on a scale of 1 to 5, that how confident are you feeling about machine learning right now after that specific coding session? Just scale yourself. Okay, I'm getting the answers. Okay, Rohan says 4. Okay, again, CSC AI ML says 4. Okay, okay, Omkar says 4. Okay. Shivam is saying curious to know more. Okay, surely we'll be doing that. Okay, Manu is rating out of 5. He is giving it's around 6.5 to 7. Mwah. Anamika is saying, sir, I missed yesterday's class. Okay, no need to worry about that. We'll be giving you the recap today and then we'll be moving forward with the rest of the parts. Right? Okay, Pratiksha, Sambhajinagar. Okay, that's totally great. So moving ahead, like after our last session on data manipulation and modeling, right? So did you try running the code again on your own? If yes, please type yes in the chat box, or if no, you can write no as well. Yes, no one is going to judge you. Okay, I'm getting multiple answers. Yes, sir, but I got the error. Manu says no. Okay. What about rest? Where are you all? Okay. During building the models. Okay, no worries. Shivam will try it by today itself. Ron says yes. Omkar says no. Okay. Others says yes, sir. Okay, that's totally quite enough, right? So let me ask you very something very interesting. So those one who are saying that they have
created and the one who tried to create the models. Now, just tell me that this one is for everyone. Everyone can answer this question, right? So if one model gives you around 85% of accuracy, and the another model which gives you around 83% of the accuracy, which one you seems to be the better one? Please type in the chat box. Be fast, everyone. 85 or 83? Which one is the best one? Manu says 85. Okay. Omkar says 85. Others says 85. Yeah, everyone is saying 85, 85. Yes. Yeah, obviously. Some will say 85, right? Some are saying 85. Maybe yes, maybe not. And today we are going to understand that why accuracy alone is not enough for the models, right? This is the main thing which we are going to do in today's session. And after that, we'll be moving with the career readiness, where we'll be seeing that what tools are going to be the beneficial for the students or for you guys, right? So, all right, so I can see that brains are slowly warming up for you all. So take a deep breath. Today we'll be moving from to building a model to comparing the models, right? So this is our going to be our main agenda. So welcome everyone to the Honeywell Future Skill Edge program. So today we are not just talking about AI, right? So today we are talking about you all along with the AI that makes your future ready career instead, right? So before we begin, type yes in the chat box if you are interested in that, or we can say one, just you can type your one career you are interested in. Either it can be the artificial intelligence, data science, whatever it is. Please type in the chat box. Okay, I'm looking over it. Okay. Okay, AI engineer, Diksha says. And what about rest? You are not going to be any engineers or something like that. Rohan says machine learning engineer. Nitin says AI/ML engineer. Okay, CSE, you changed your name, right? Ramika says HR. Mhm. So everyone can connect to the Namika itself directly because she is going to be the HR and you guys are going to be the engineer. So she might hire you, right? Okay. So before we move towards the today's session, everyone knows about the Honeywell, right? So it's the program, we can say it's a CSR initiative by Honeywell itself, right? So let's have some session rules, hygiene rules before we move forward. So please join on time that you have already did. That's a huge pleasure for you all, right? Second one, keep your mic muted. Use chats only for the session topics. No recordings. For this time, keep your notebooks and pens be ready for with you. So why it is? Because knowledge without writing becomes motivation, right? But written knowledge becomes transformation for you all. जितना तुम बिना लिखे समझोगे, that is not going to be something which is curious about the topics. लेकिन जब आप लिख करके करोगे, then you will be understanding that at a higher pace, right? Yeah. So type ready if you guys are ready with that. Should we begin? Okay, Pratiksha says, I'm interested in AI engineer. Okay, that's great. Okay, Omkar says ready. Others says, yes, sir, we can start with that. Okay, that's great. So today's agenda is that today we'll be covering why career readiness is matter, basically why career readiness matters a lot, right? Second, we'll be looking over the, we can say, AI and career readiness, right? And before that, we'll be having the recap of the last sessions as well. That is the mandatory concept. We cannot forget that, right? Then career trends and the skills discovery, where we have to look over that, what we can do, how we can make our resumes very well, how we can make our LinkedIn's very well, what are the extensions for that. We'll be seeing all these stuffs as well, right? And it's not just about listening the session, right? So this is going to be something like where you will be learning, applying, thinking, and improving yourself, right?
And by the end of the session, you will know that how to use AI as your career assistant, right? Yeah. So here's a quick baseline form. So please pull out your phones and scan the QR code and fill out the form. Be quick, everyone. So once you are done with that, please type done in the chat box. Okay. Alim says done. What about rest? Are you done with that? Okay. I'm getting the multiple dones over there. My DMs itself. Okay, okay, done, 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 done. Okay, that's great. That's right. So, so before we move ahead, so in the last previous class, right? So let's quickly connect today that what we did usually in the last session, right? So in the previous class, we worked deeply on data manipulation part and the preparation part, right? So we didn't jump directly into the models. Why? Because in machine learning, data preparation is something which is not optional, right? It's we can say it is the foundational one. So we handled the missing values, encoded the categorical values, we can say, or we can say that encoded the categorical variables as well, right? We did the feature selection that is called to be our feature engineering, right? Then we did our train test split, then data cleaning and the structures as well, right? So we did all of these things in yesterday's class, previous class, sorry, right? But it's something that is called to be your, we can say garbage in, garbage out, right? Like if your data is not clean, right? So no matters that how powerful your algorithm is, the results won't be reliable. So this is the scenario where we used to say that whenever we will be moving with our first model, we have moved yesterday already. That was for the logistic, right? So we started with the we can say we started with a baseline understanding of the model. That was the logistic regression, and we saw that how algorithm tries to learn the patterns from the data, right? Now I would like to ask you something, that when we built our first model yesterday, day before yesterday itself, right, in our previous session, so did we immediately assume that it is going to be the best possible model? Is it, was it like that? How many of you think about this? You can write in the chat box. How many of you think of that? I'll repeat the question once again. Like yesterday, when we built our first model, so while creating that model, did we immediately assume that it is going to be the best possible model for my this use case itself? How many of you think yes or no? You can directly type in the chat box. Yeah. Okay. I have got multiple answers. Others says no, it isn't best. Okay. Manu says it can be the best. Yes, you are right. It can be the. Rajkumar says no. Okay. Daksh says yes, it can be the best. And Priyanshi says yes, it can be the best. Okay. I got multiple yeses and mixed of, we can say yes or no, right? Yeah. Obviously, we can say that no, it's not going to be the best model, right? Because in machine learning, building one model is just the beginning, we can say, right? And today's session is where things are getting interesting, going to be interesting, we can say. If yesterday was about preparing the ingredients and cooking one dish, we can say today is about trying all the different recipes and comparing that which one is going to taste the better one or the best, we can say, right? So we are going to explore the different machine learning models, that how each model thinks, their assumptions, we can say their strength and the weakness as well, and the most importantly, that how to compare them properly, right? Because
in real world, if we'll be saying machine learning is not about कि model run हो गया या accuracy आ गई, that is done. No, it's all about that. Is this model overfitting? Is this model and is underfitting? Is it generalizing well or not? Is it going to be the interpretable, or is it practical for the business use or not? So these are some questions while you create a specific model in machine learning, right? Now the question comes over here that why we use multiple models, right? So now think that if one algorithm existed, right, that worked perfectly for every data set, तो फिर इतने सारे algorithms होते ही क्यों, right? For example, if we'll talk about supervise only, we have multiple algorithms in two sections as well for the classification, for the regression. चलो classification की बात करते हैं, right? So in classification also we have several algorithms. Either it can be logistic, either it can be key nearest neighbor, decision tree, random forest, naive bias, right? And many more are there related to that stuff. So each model has different way of learning the patterns, right? Some are simple and interpretable, some are complex but powerful, right? Some handle non-linearity better than rest of them. Some are prone to the overfitting, right? So today we'll see the difference clearly, right? And I want to shift your mindset for today that don't think like a coder itself, we can say. Think like a problem solver, or as it is that I have already conveyed in the previous session, that think like a problem solver. Your आपका goal ये नहीं है that कि बस मेरा code चल जाए. Your goal is that कि which model is going to be suitable for this problem statement, right? Or we can say this business problem. Because in real companies, no one cares about which algorithm you are using. Okay. We have created one model. We have in previous session we have seen that we have created a model that is we have written a single line of a code. That model is equals to logistic regression, right? Instead of that logistic regression, if I will be writing decision tree, if I will be writing random forest, then I will be having my model for the decision tree random forest. But there's no one is going to ask you that which model you have created, right? They only care about the accuracy of that model, stability of that model, interpretability of the model, and the scalability of that model. And that's what we'll focus on today. So we'll be going with the model comparison, but not only simple model comparison. We'll be doing it with the logics itself, right? So before we start, I have some questions for you for you all. So as you remember that within the last previous session, we have handled the missing values, right? So what do you think that why did we handle the missing values before training the model? Just tell me in the chat box. What do you think about for this? I will repeat the question once again, that why did we handle the missing values before training the model? Type your answers in the chat box. I'm looking over there. Okay. I got my first answer from Manu. Cause it may lead to confusion while getting accurate output. Okay, it can be. It can be done, right? Okay. After that, part two, testing or training phase. Okay. Nitin says quality data gives the quality result. Ah, that's the reality. Rajkumar says to train the model efficiently and reduce the error. Okay. And what about rest? कहाँ गए बाकी सारे? Okay. Lack of accurate answers, easily understand data. Okay. When it says to make accuracy. Okay. Shoya says reduce errors and train correctly. Yeah, it can be something like that. But the main reason is that so most of the algorithms cannot handle missing values directly, right?
जब भी हम मॉडल बनाने जाते हैं तो whenever we used to apply the create the models, right? तो we usually create the models using the algorithms, right? So most of the algorithms cannot handle that directly. So either we remove them or replace them. So these are only two options. ये मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था that we have only two options. या तो हम उसको ड्रॉप कर दें या तो हम उसको फिल कर दें, right? So we replace them using या तो mean, median, or either it can be the mode one depending on the data's distribution, right? Now the second question comes here for you all. So when do we use mean and when do we use median to fill the missing values? Just tell me in the chat box. I have delivered this in the last session itself. Yes. How many of you remember that? Please type your answers in the chat box. Sorry. That why do we use when do we use mean and when do we use median to for filling the missing values? Okay, I have got my first answer. Yeah, Parthu, you have missed lots of the things. We have already covered lots of stuff, right? It can be from a machine learning, deep learning, NLP, generative AI. We have covered everything, or almost everything. And even though you have missed the coding part as well, but no worries. Okay, mode for the category. Shivam says, Shivam, I have asked about mean and median. That when do we use mean and when do we use median? If data has outliers, we generally use median. Quality data, okay. If data has outliers, we generally use medians. Okay, ठीक है Nitin. We'll look over this. Let others also answer. Median for different data type. Okay. Okay, let me clear it out for you, right? So it's something like that, basically. If your data is symmetric, right? So then at that time we'll be using mean. Or we can say if you are having integer, the data type of that specific column is in the form of integer, you can use either mean or median, right? But if your data has outliers, in that scenario, you will be definitely using median, right? So this is the main difference between both of them. Because mean gets affected by extreme values. Those are called to be the outliers, right? Now, last session, we have done one more thing that was related to encoding. How many of you remember about that? Please type yes or no in the chat box. Encoding. We have learned something related to the encoding. Yes? Yes, yes, yes. I have got multiple yeses over there, right? So I have told you two different types of encoding. First was label encoding, and the second was one hot encoding, right? Now I will be asking you the simplest one, right? So why did we convert in yesterday's class also? Why did we convert that categorical variable into a number? Just tell me about this thing. Why did we convert the categorical variables into the numbers? सिंपल सा आंसर है, सबको पता है इस चीज के बारे में. Just try. Okay, I have got multiple answers. So that model can understand it. Nitin says model understand numerical values rather than the categorical values. You are absolutely correct for applying logistic regression. Okay. Yeah. So the main reason was that which Nitin told, that models understand numbers, not text labels. And that's why doing encoding is very much important in machine learning itself, right? And after doing that coding, we did one more thing. We splitted the data into two parts, right? First was the training and the second was the testing data. We divided into two parts, training and the testing one, right? So with okay, let's leave that. Let me ask you that. So why did we
split the data set into training and testing part. Just tell me about this thing. कि अब divide तो करा, that everyone knows. We divided the data into two parts. That can be the testing and the training. But वो करा ही क्यों? I have told the answers in the previous class as well. Let me see that how many of you remember about that stuff. Okay, I got my first answer. That is from let me yeah, it's from Shivam. Shuffling by random for good data. हाँ ठीक है, वो तो हमने shuffle करा. But the question is, Shivam, that uh, why did we split that data? Right? The question was this, कि हमने split ही क्यों करा? ऐसा क्या नीड पड़ गया कि हमें split करना पड़ा data? Any idea about this one? Please type yes or no in the chat box. I will be giving you the answer if you don't know about that. Okay, Pratiksha says for checking the accuracy, right? For training mixed data. This answer was from Shivam. Okay, okay. So basically, so it's not like that, what you are thinking. So just have a look. If we test on the same data, right, on which we trained our model. So it's like checking the exam answers, we can say using the answer sheet only. So that doesn't make sense, right? So the similar scenario is say with the models as well, right? So we basically divide it into two part because to get our model learn, right, and after that it proves itself. So while we split into two parts, that is called to be your training part and the testing part. The scenario is simple, that we divide it into two parts basically to get it trained on the training data and to get it tested on the testing data. And that is the main reason. I hope that everyone has understood about this, right? If yes, please drop yes in the chat box. Okay, I got multiple yeses over there. Okay, Manu, okay, done, right? So it's very good to see that you all understood and you all remember about the last previous session's concepts, right? So in today's session, what we'll be doing, we'll be moving a step by step with, we can say, building different models, evaluating them, we can say, right, using different several matrices. And after that, we'll be comparing the performance of that specific models, and we'll understand that what is overfitting, what is underfitting, why it comes, and how it usually comes. And then we'll make our final recommendation, right? And remember that highest accuracy does not always mean to be the best model. Sometimes a slightly lower accuracy is also acceptable, we can say. Yes, right? So let's start with that. Okay. So in yesterday's class, we have seen that we have moved with the logistic regression, right? So I will be moving to this. Sorry for that. I will be coming to this one. Now just have a look, right? So we were here till we have got this accuracy, right? So I will rerun this one. So before that, I will remove this thing, right? I will restart my kernel and run my all cells, right? Let it be completed, and after that, we'll be moving. Okay, done till here. So, so you all have open your terminal, or we can say the Jupyter notebook, or the Colab, or whatever you were using. If yes, please drop yes in the chat box. Be fast, everyone. Are we on the same page? If yes, please drop in the yes in the chat box.
Okay. Okay. I've got multiple yeses over there, right? Others open sir, Shubham open sir, yes sir. Okay. Okay, that's done. So now just have a look. So we have created one of the algorithm that was for the logistic regression. Let me bring it up, right? So we have made our model that was for logistic regression, and we have used dot fit, right? So ये dot fit किस लिए यूज करा था कल हमने? Please drop your answers in the chat box. Be fast, everyone, for this time. Why we have used this dot fit? कल डॉट फिट करके क्या करा था हमने? ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन क्या था? Does anyone remember of this? Okay, yes, I have got the answer from Rajkumar, right? So हमने क्या करा था? हमने यहाँ पे मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद व्हाट वी डिड, हमने उसके अंदर डेटा डाला. डेटा कौन सा डाला? एक्स ट्रेन डाला, वाई ट्रेन डाला, राइट? सो इफ यू रिमेंबर अबाउट द स्टफ, आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव टोल्ड यू दैट अगर हम कोई भी डेटा लेते हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये कोई भी एक डेटा है, सो इस डेटा को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस वन इज कॉल्ड टू बी योर ट्रेनिंग एंड दिस वन इज कॉल्ड टू बी योर टेस्टिंग पार्ट. ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर डेटा को हम डिवाइड करते हैं. तो जब इस दो पार्ट के अंदर डेटा को डिवाइड करते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं: एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, देन वाई ट्रेन, देन वाई टेस्ट, राइट? तो जब हमने अपना मॉडल बनाया, फॉर एग्जाम्पल मॉडल is equals to let's suppose I have written here that is called to be your logistic regression that will be followed by parenthesis. ठीक है, ये मैंने मॉडल बना दिया अपना. तो जब मैंने मॉडल बनाया तो अब इस मॉडल के अंदर मेरे को डेटा डालना पड़ेगा. अब डेटा डालना पड़ेगा तो डेटा जब डालेंगे, कौन सा डेटा डालेंगे? जिसके ऊपर हमारा मॉडल ट्रेन होगा, राइट? जिसके ऊपर हमारा मॉडल ट्रेन होगा. तो अब ट्रेनिंग वाला डेटा लेंगे यहां से. तो ट्रेनिंग वाला डेटा कौन कौन सा है? दैट इज माई एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, राइट? सॉरी फॉर दिस. एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ये मेरा दो डेटा है जो कि मेरा ट्रेनिंग वाला है. तो ये मैंने डाल दिया मॉडल डॉट फिट, लेट सपोज. सॉरी, सॉरी फॉर दिस. जल्दी से बनाता हूँ मैं. ठीक है, दो ये डेटा था डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. ठीक है, ये मेरे पास एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, राइट? ये चार डेटा आ गया मेरे पास. एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमने यूज करा किसके लिए? मॉडल को बनाने के लिए. जब हमने लिखा मॉडल इज इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेट्स सपोज. ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा मॉडल डॉट फिट और यहाँ पे पास करा एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन. तो ये दोनों डेटा किस लिए यूज हुआ? मॉडल को, अपना मॉडल को ट्रेन करने के लिए, फॉर ट्रेनिंग द मॉडल, राइट? अब बच गया हमारे पास ये डेटा और ये वाला डेटा जो हमने चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था, राइट? अब दो चीजें, अब ये दोनों कब यूज होंगे? ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो कि अब जब मैं चेक करूंगा कि ये जो मेरा मॉडल मैंने अपना ट्रेन करा, राइट? जब मैंने अपना मॉडल ट्रेन करा, देन व्हाट इट इज प्रिडिक्टिंग, ये मेरा मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? सो फॉर दिस आई विल राइट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, दैट विल बी विद एक्स टेस्ट. ठीक है, जो मॉडल चेक करते हैं कि मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है. ठीक है, मॉडल मॉडल प्रिडिक्शन, मॉडल प्रिडिक्शन गोज विद एक्स टेस्ट. ठीक है, ये जो एक्स टेस्ट वाला डेटा था ये हम यूज करते हैं मॉडल को चेक करने के लिए कि मेरा मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है. अब मॉडल जब मैंने चेक कर लिया कि हाँ माय मॉडल इज प्रिडिक्टिंग दिस दिस दिस, तो अब ये जो मेरा मॉडल है, क्या वो सही प्रिडिक्ट कर रहा है या गलत प्रिडिक्ट कर रहा है? अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं, राइट? तो जैसे कल हमने देखा था, हमने एक्यूरेसी फाइंड करा था, राइट? ये हमने एक्यूरेसी निकाला था कल. तो जब कल एक्यूरेसी निकाला था, व्हाट इज दैट एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज आर इवेल्युएशन मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स, और वी कैन से द क्लासिफिकेशन मॉडल्स. ठीक है, तो
अब जब हम ये एक्यूरेसी निकालते हैं तो हम कैसे लिखते हैं एक्यूरेसी? वी यूज टू राइट एक्यूरेसी, सॉरी, वी यूज, अरे हाँ, वी यूज टू राइट एक्यूरेसी। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? जस्ट अलाउ मी फॉर अ मोमेंट। ठीक है, एक्यूरेसी तब हम लिखते हैं एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर अंडरस्कोर स्कोर, दैट विल बी फॉलोड बाय दो चीजें। अब इसके अंदर हम दो चीजें डालते हैं। पहली चीज क्या, कि जो मेरा ये मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, एक तो ये चीज, और दूसरी चीज जो हमारा ये वाई टेस्ट है। वाई टेस्ट क्या है मेरा? दिस इज कॉल्ड टू बी आर न्यू डेटा। ठीक है, इसको हम न्यू डेटा बोलते हैं, राइट? तो जब हम अपने मॉडल को इवेल्युएट करते हैं तब हम उसको पुराने एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर नहीं चेक करते, जैसे हमने यहाँ पर अपना करा, यहाँ पे मॉडल करा तो मेरे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट करा। तो जब हम उसका प्रिडिक्शन चेक कर रहे हैं तो भी हमने न्यू डेटा पास करा, राइट? और जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो भी हम अपना न्यू डेटा पास करते हैं, ताकि हमारा मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो कितना सही प्रिडिक्ट कर रहा है या कितना गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, ये चीज को हम फाइंड आउट कर सके, राइट? आई होप दैट आई एम क्लियर टू एवरीवन टिल हियर। इफ यस प्लीज ड्रॉप यस इन द चैट बॉक्स, और अगर कुछ दोबारा पूछना है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। आई एम लुकिंग ओवर द स्क्रीन चैट बॉक्स नाउ। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी, आई विल रिपीट दैट वंस अगेन। ओके, रोहन सेज यस सर इट्स क्लियर, शुभम सेज नो सर, क्लियर, ठीक है। ओके ओके ओके, राइट। Rajkumar says clear. Sir, can you please repeat it once? Okay. Sir, I can't understand nicely what you do. Please repeat that once again. Okay, okay, okay. ठीक है. Just have a look over here. Okay. Now just have a look. ठीक है, ध्यान से समझना। Let's suppose, दिख रहा है ना, my screen is visible to you all, right? Okay. Now just have a look. I was having some data, right? I was having the data, and that specific data, for example, we split that data into two parts, right? First one is called to be the training. Second one is called to be your testing, right? अब जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड करा, तो लेट्स सपोज इस ट्रेनिंग के अंदर दो चीजें बनी, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट। अब टेस्टिंग के अंदर दो चीजें बनी, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, राइट? अब जब मैं अपना मॉडल बनाऊंगा, राइट, मॉडल इज इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मैंने मॉडल बनाया। तो जब मैं मॉडल को अंदर डेटा डालूंगा, व्हेन विल पुट द डेटा, राइट, सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, राइट? अब मैं ये दोनों डेटा यूज करूंगा, कौन सा दोनों डेटा यूज करूंगा? मैं ये दोनों डेटा यूज करूंगा, एक तो ये मेरा एक्स ट्रेन वाला और दूसरा मेरा ये वाई ट्रेन वाला। अब चार में से दो डेटा यूज हो गया, यहां तक क्लियर है सबको?
यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो, बी फास्ट एवरीवन। यस, यहां तक क्लियर है, राइट? अब हमारे पास दो डेटा बच गया, एक ये डेटा बचा और एक ये डेटा बचा, राइट? तो नाउ जस्ट हैव अ लुक। अब जब मैंने मॉडल के अंदर डेटा डाल दिया, माय मॉडल इज ट्रेन्ड। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरा मॉडल ट्रेंड हो गया, ठीक है? ट्रेंड द मॉडल, ठीक है, राइट? अब जब मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, देन व्हाट वी विल बी डूइंग? अब विल चेक दैट व्हाट प्रिडिक्शन इज बीइंग डन बाय माय मॉडल, राइट? चेक द प्रिडिक्शन, check the prediction. For checking that prediction, what will be writing? Model dot predict, and here I will be passing, जब मॉडल चेक करना होता है, प्रिडिक्शन चेक करना था, तब हम यूज करते हैं एक्स टेस्ट, राइट? दिस वन, एक्स टेस्ट, ठीक है? तो यहां पे लिखूंगा मैं एक्स टेस्ट, ठीक है? सो व्हाट डज इट मीन्स कि जब मेरे को अपना प्रिडिक्शन चेक करना है, दिस वन इज यूज्ड फॉर चेकिंग द मॉडल prediction, right? Now this was left, this scenario was not left, that is called to be your y test, ठीक है? तो अब जब मेरे मॉडल को इवेल्युएट करना है, ठीक है, फॉर इवेल्युएटिंग द मॉडल, राइट? तो फिर हम क्या लिखते हैं? विल बी राइटिंग ओवर हेयर दैट फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी टेस्ट करना है, तो एक्यूरेसी स्कोर फॉलोड बाय दिस parenthesis, एंड इन दिस parenthesis विल बी राइटिंग अपना ये मॉडल का, लेट्स सपोज मैंने इसको y दिया, एक वेरिएबल दिया y, तो मैंने लिखा यहाँ पे y, ठीक है, और कॉमा दिस y टेस्ट, TEST टेस्ट, दिस y टेस्ट, या फिर आई विल मेक इट मोर सिंपल बाय चेंजिंग द कलर, देन यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिख देते हैं y टेस्ट, राइट? सो दिस वी हैव यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द मॉडल। आई होप दैट आई एम क्लियर टू एवरीवन नाउ, कि अब समझ में आया ये चारों चीजें कहाँ यूज होती है। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग द मॉडल, एक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द मॉडल प्रिडिक्शन, एंड वाई टेस्ट इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द मॉडल्स, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Please drop your messages in the chat box. Okay, Shivam says, okay. Shine says that understood, sir. Thank you for repeating that once again. Momka says yes, sir. Chirag says yes, sir. Okay. Okay, that's great. That's great. That's great. ठीक, चल. Let's move ahead, right? Let's come back to that actual coding part, right? So यहाँ तक हमने क्या करा? अपने मॉडल को फिट करा, सिंपली अपना ट्रेन करा मॉडल को ट्रेन करने के बाद वी हैव चेक्ड दैट व्हाट माई मॉडल इज प्रिडिक्टिंग, राइट? यहां तक हमने वो चीज चेक करा। नाउ अभी इवेल्युएशन नहीं करेंगे, इवेल्युएशन विल डू एट द लास्ट, ठीक है? लेट्स क्रिएट अनदर मॉडल, अभी दूसरा मॉडल लेते हैं, राइट? सो नाउ फॉर क्रिएटिंग अनदर मॉडल व्हाट विल बी डूइंग, विल बी अगेन इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी, जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा था ना फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगेन विल बी इंपोर्टिंग इट फॉर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हेयर फ्रॉम sklearn, which was my second model, that is going to be, okay, k nearest neighbor, right? Come to this one, sklearn dot neighbors, right? What we'll be doing, we'll be import, and then we'll be writing k neighbor classifier, and neighbors classifier, right? Okay, n will be capital for neighbor, right? Done. So we have imported this one. Now what I will be simply doing, फिर मॉडल कैसे बनाना है नॉर्मल, इट इज गोइंग टू बी द वेरी इजीएस्ट पार्ट, दैट आई विल बी अगेन राइटिंग ओवर हियर दैट आई एम गोइंग टू यूज द let's make it for, let me give the, let me change the name for this. This is going to be logistic regression model, right? I will make changes over here as well. Logistic regression model dot fit, right? Again we'll be making changes over here, right? Let me rerun it. Done.
right? So now this time I will be making the KNN, K nearest neighbor model. I will write it like this: KN nearest neighbor, KNN model is equals to, I will write this thing, K neighbor classifier followed by this parenthesis, right? Now again इसके अंदर मैं वही चीजें डालूंगा, दोनों चीजें सेम आफ्टर दिस वन, बट as we have told you, जब हमने देखा था के नियरेस्ट नेबर्स को, राइट, जब हमने के नियरेस्ट नेबर्स को देखा था तो उसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास कुछ होता था, पॉइंट्स होते थे, इधर कुछ पॉइंट्स होते थे, और एक न्यू डेटा आता था, राइट, और हमें डिफाइन होता था दैट आइदर के इज गोइंग टू बी 3 और के इज गोइंग टू बी 5। तो 3 है तो हम इसके सबसे नियरेस्ट वाले 3 नेबर्स को देखते थे, राइट, ऐसे ही होता था। तो वी हैव टू डिफाइन दैट कि हमें वो के डिफाइन करना पड़ता है कि हम कितने नेबर्स को देखने वाले हैं, राइट। सो ऐसे ही यहाँ पे भी मैं डिफाइन करूंगा दैट आई एम गोइंग टू पुट n नेबर्स इज इक्वल्स टू 5। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं इसके नियरेस्ट 5 वैल्यूज को देखूंगा, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? if yes, please drop yes in the chat box, or you can do thumbs up as well. You can react with the thumbs up as well. अभी तक समझ में आया? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ जस्ट हैव अ लुक, जब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपना k इज इक्वल्स टू गोइंग टू बी 5, राइट। अब मॉडल मॉडल इज प्रिपेयर्ड, इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब मॉडल बन गया मेरा, मॉडल बनाने के लिए अब मेरे को इसमें डेटा डालना पड़ेगा, राइट। मॉडल तो बना दिया, अब मॉडल मेरा ट्रेन करना पड़ेगा। फॉर ट्रेनिंग दैट मॉडल आई विल बी पुटिंग दैट सेम, so knn model dot fit, again I will be passing that same stuff, x train and comma y train, राइट। तो इसको रन करते हैं, तो नाउ यू कैन हैव अ लुक कि मेरा के नियरेस्ट नेबर का मॉडल जो है दैट इज रेडी फॉर मूविंग, राइट। और मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आई विल राइट लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रिडिक्शन, राइट, और एंड फ्रॉम हेयर आई विल राइट के एन एन, के नियरेस्ट नेबर का प्रिडिक्शन। अब आई विल सी कि मेरा मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, राइट। सो आई विल राइट हियर के एन एन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, right, followed by this parenthesis, and here I will pass x test, ठीक है, कि मेरा मॉडल ने क्या प्रेडिक्शन करा, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो वेयर वी हैव अ लुक टुवर्ड्स द डिफरेंट मॉडल्स। अभी हमने दो मॉडल्स बना दिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नियरेस्ट नेबर वाला, राइट। अब टू आर लेफ्ट फॉर डिसीजन ट्री एंड द रैंडम फॉरेस्ट। Let's make those as well, and after that we will be comparing all the four models at a single time itself, so that it will take less time, right? Now for doing this, for using that decision tree classifier, we'll be again importing this library. Now this time from sklearn dot trees, right, dot tree, I will be import decision tree classifier, right? T will be capital classifier, right? अब कहाँ गलती कर दी? Okay, double S will be there. Decision tree classifier, right? Now again I will be writing the same, that this time I will be going to write dt underscore model is equals to, again I will copy this thing and again I will paste it over there along with the this specific, we can say, parenthesis, right? Now अब जब डिसीजन ट्री बनता है, राइट, तो डिसीजन ट्री जब भी हम बनाते हैं तो वी यूज टू राइट, वैसे तो नहीं भी लिखोगे तो कोई उतना खास फर्क नहीं है, बट हम लिख देते हैं दैट इज रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 42, राइट, ताकि वो मेरा जो भी डेटा है वो सारा का सारा मिक्स होता रहे वहां पर जब भी वो डिसीजन ट्री के अंदर जाए, जब भी ट्रीज फॉर्म हुए तो मेरा डेटा मिक्स होए, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करे कि कौन सा रूट नोड में जाएगा, कौन सा लीफ नोड में जाएगा, अकॉर्डिंगली इट विल डिसाइड, राइट। Now, after that, what we'll be doing, we'll be looking over that, we'll be creating the model now. ठीक है, मॉडल बना दिया, अब मॉडल के अंदर डेटा डालेंगे। अगेन विल बी राइटिंग हियर dt underscore model, and then I will be writing dot fit followed by these two brackets. I will be writing x train, comma
कॉमा बाय ट्रेन, राइट। ये मेरा बन गया डिसीजन ट्री का मॉडल। अब मॉडल बना दिया, नाउ आई हैव टू चेक कि मेरा मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। तो आई विल राइट डी टी अंडर स्कोर प्रिडिक्ट, राइट, इज इक्वल्स टू डी टी अंडर स्कोर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, that will be followed by this parenthesis and I will write over here x test, right। अभी यहां तक किसी को कंफ्यूजन कोई? सबको क्लियर है यहां तक? yes or no everyone? You can react with the thumbs up, you can type in the chat box, whatever suits to you, you can do it. Okay, okay, I'm getting lots of thumbs up, right? That's great, man. That's the spirit totally. So now, once we are done with this, what we will be doing, our question appears over here, right? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम डिसीजन ट्री बनाते हैं, राइट, जस्ट हैव अ लुक, जब भी हम डिसीजन ट्री बनाते हैं, आई विल स्विच टू हियर। तो डिसीजन ट्री कैसे बनता है? डिसीजन ट्री यूजुअली हमारा एक डिसीजन नोड होती है, दिस इज कॉल्ड टू बी आर रूट नोड, राइट। अब उसके बाद हमारी ये स्प्लिट होता है, फिर ये आता है हमारा डिसीजन नोड आती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू बी द डिसीजन नोड, डोंट गो इन स्पेलिंग, ओके, डिसीजन नोड। अब जब डिसीजन नोड आई, this one is going to describe that whether whether some splits are there or not। तो जो अगर एंड में जो हमारे पास स्प्लिट बचती है उसको हम बोलते हैं लीफ नोड, लीफ नोड, राइट। अब एक बात देखो, अगर हम डिसीजन ट्री बना रहे हैं तो हम सम अमाउंट ऑफ डेटा इसके अंदर डालेंगे, सम अमाउंट ऑफ डेटा इसके अंदर डालेंगे, सम अमाउंट ऑफ डेटा इसके अंदर जाएगा, फिर वो आगे कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, राइट। तो डेटा जो हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20% डेटा दिया, ठीक है, तो मान के चलो अगर मैंने 20% डेटा दिया या फिर मैंने 70% डेटा दिया, तो 70% डेटा के अंदर मेरे पास लेट सपोज कि जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज थी वो 100 थी, ठीक है, जिसमें से 70% ट्रेनिंग के लिए था, तो मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट करा। तो 70% में से मेरे पास आया 10% इधर आ गया, 20% अभी इधर बाकी है, ठीक है, 40% इधर आ गया, ठीक है, 70 यही हो गया, मान लो इसको कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, और इधर 10% आ गया, 5% इधर आ गया, 5% इधर आ गया, तो कुछ कुछ करके मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कम्स ओवर हेयर कि अब ये मेरा डेटा, जो भी मैंने डिसीजन ट्री का मॉडल बनाया, अब ये मेरा मॉडल ओवरफिट कर रहा है या अभी भी अंडर फिटिंग में ही है, ये कैसे डिसाइड होगा? डज एनीवन नोज अबाउट दिस थिंग कि मॉडल ओवरफिट कब होता है और अंडर फिट कब होता है? किसी को पता है इस चीज के बारे में? यस और नो? और यू कैन यूज थम्स अप थम्स डाउन इफ इट इज देयर, जल्दी से बता दो यस या नो, बस सिंपल, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। नितिन सेज यस सर, इज इट लाइक दैट? ओके, यशवी सेज नो, व्हाट अबाउट रेस्ट? शिवम सेज नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, चलो अब लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम हैविंग एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 3 मॉडल्स बनाऊंगा अभी, राइट। सो द फर्स्ट मॉडल दैट कम्स टू बी, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये मेरे पास एक ही गया, और द सेकेंड मॉडल कम्स ओवर हेयर, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट, एंड थर्ड मॉडल कम्स ओवर हेयर, दिस इज अगेन गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, हो गया, फॉर दैट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ आया है, ऐसे ऐसे करके बना, मेरे पास 3 मॉडल बनाए मैंने, राइट। अब नाउ इट इज विजिबल इन अ सिंगल फ्रेम, ठीक है। तो नाउ जस्ट हैव अ लुक कि अब फर्स्ट वाले के अंदर जो मेरे पास डेटा लाए करा, राइट, तो फर्स्ट वाले के अंदर मेरे पास, अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, पहले वो समझते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास 2 चीजें हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड टू बी माई बायस, राइट,
First one is called to be bias. Sorry. Bias and second one is called to be the variance. ठीक है, ये दो चीजें होती हैं इसके अंदर. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दीज टू टर्मिनोलॉजीज? बायस क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है? किसको किसको पता है ये दो चीजों के बारे में? एनीवन, एनी गेसेस अबाउट दिस थिंग्स? Yes or no? Yes or no? Just type, yeah, type in the chat box. Priyanshi says no. Prathu says no. Okay. Hariom says no. Nitin says high bias underfitting, high variance overfitting. ठीक है. थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा गलत है, वी कैन से. ठीक है. एक ही फैक्टर डिफाइन डिफाइन नहीं करता नितिन, दोनों फैक्टर डिफाइन करता है. आई विल शो यू. ठीक है. नाउ जस्ट हैव अ लुक. देखो, बायस का मतलब क्या? कि मॉडल इज बैड इवन वाइल लर्निंग ऑल्सो. ठीक है, मतलब कि वी कैन से कि हाउ मेनी मिस्टेक्स डज योर मॉडल मेक्स ऑन द डेटा विच इट हैज ऑलरेडी स्टडीड. राइट. इसका मतलब क्या कि जब भी मैं बायस की बात करूंगा, विच मीन्स कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग एरर्स. ट्रेनिंग एरर्स. राइट. मतलब कि मेरा मॉडल मेरा मॉडल माय मॉडल इज ट्रेन्ड. राइट. और स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है. मॉडल इज ट्रेन्ड बट आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड देन ऑल्सो इट इज मेकिंग द मिस्टेक्स. दैट इज कॉल्ड टू बी द बायस. राइट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस वेरिएंस. ये अभी समझ में आया सबको? यस और नो कि बायस क्या होता है? Did you got that? If yes, please thumbs up. Do thumbs up in the chat box, or we can do in the you can share the reactions as well. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. ओके, आई हैव गॉट मल्टीपल. राइट. सो अकॉर्डिंगली, अब वेरिएंस क्या होता है? ठीक है, तो वेरिएंस इज समथिंग दैट वेयर मॉडल लुक्स गुड while learning but fails on the new data. राइट. कि मतलब हाउ मेनी मिस्टेक्स द मॉडल can make on on unseen data set, or we can say the new data set. right. For example, मान के चलो इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग एरर. टेस्टिंग एरर्स. राइट. कि ये मेरा इट इज गुड ऑन इट हैज ऑलरेडी लर्न द इट इज ऑलरेडी बीइंग ट्रेन्ड. ये ट्रेंड हो चुका है और ये मेरा ट्रेंड मॉडल है. बट जब भी हम इसको न्यू डेटा पास कर रहे हैं, राइट, जब भी हम इसको न्यू डेटा पास कर रहे हैं, माय मॉडल फेल्स ओवर देयर. तो दिस इज कॉल्ड टू बी द वेरिएंस. अभी क्लियर है ये दोनों चीजें सबको? व्हाट इज बायस, व्हाट इज वेरिएंस? दोनों चीजें क्लियर है? इफ यस, यू कैन डू द थम्स अप और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल. ओके. 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 आई कैन सी. Okay, I can see multiple hands up, thumbs up, and the yes in the chat box as well. Right. So we are good to go. Right. Now just have a look. अब मेरे पास ये तीन मॉडल्स हैं. राइट. अब जब मेरे पास ये तीन मॉडल्स हैं तो लेट्स सपोज. ठीक है. सॉरी. लेट्स सपोज कि मेरे पास जो ट्रेनिंग एरर है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दैट बायस is going to be this color, right? Training error, and we can say this, and variance this color. Not much good. ठीक है. Let's suppose चलो ये ले लेते हैं. ठीक है. Let's suppose variance is going to be testing errors this color. ठीक है. अभी समझ जाना कि ये अगर मैं इससे बनाऊंगा तो ये मेरा बायस है और ये मेरा वेरिएंस है, यानी कि ये मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट पे वर्क कर रहा है और ये मेरा टेस्टिंग डेटा सेट पे वर्क कर रहा है. ठीक है. नाउ जस्ट हैव अ लुक. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मेरे पास कुछ डेटा लाए करा मेरे ग्राफ के ऊपर, फर्स्ट ग्राफ के ऊपर मेरा कुछ डेटा लाए करा. तो लेट्स सपोज कि मेरा जो डेटा लाए करा वो कुछ इस तरीके से लाए करा. ठीक है. ऐसे करके कुछ लाए करा. अब जो मेरा ट्रेनिंग एरर था जो मेरा ट्रेनिंग एरर था वो इस लाइन से दूर है.
राइट। वो इस लाइन से दूर है ना, दूर है ना। राइट। तो अगर मेरा ट्रेनिंग एरर दूर है, इट मींस कि मेरा हाई बायस है। राइट। हाई बायस यानी कि ट्रेनिंग एरर ज्यादा है इसके अंदर। राइट। ये ज्यादा है अब इसके अंदर। अब लेट्स सपोज कि अब वेरिएंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि जो भी हमने न्यू डेटा पॉइंट डाला, ठीक है, और न्यू डेटा पॉइंट मेरा कुछ लाई इधर कर रहा है, इधर पास में कर गया लाइन के, या फिर थोड़ा लाइन से थोड़ा दूर कर गया, ऐसे ऐसे करके लाई कर गया। राइट। तो इट मीन्स क्या कि मेरा जो टेस्टिंग एरर है, जो ये टेस्टिंग एरर एरर है, यानी कि वेरिएंस जो है, ये मेरा दोनों हो सकता है, दूर भी लाई कर सकता है और लाइन के पास भी लाई कर सकता है। तो इट कैन हैव बोथ लो वेरिएंस एंड हाई वेरिएंस एज वेल। राइट। तो इसके अंदर ये दो सिनेरियो है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अंडर फिटिंग। राइट। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अंडर फिटिंग, जहां पे हमारा हाई बायस हो, या फिर लो बायस हो, या फिर हाई हाई वेरिएंस, सॉरी, हाई बायस हो और लो वेरिएंस हो, या फिर हाई वेरिएंस हो, तो उस तरीके की प्रॉब्लम को बोला जाएगा अंडर फिटिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस प्लीज ड्रॉप यस इन द चैट बॉक्स, और यू कैन डू थम्स अप। अभी क्लियर है ये चीज, प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी सबको क्लियर है कि अंडर फिटिंग कब हुआ? राइट। नाउ जस्ट हैव अ लुक फॉर द ओवर फिटिंग। राइट। अब ओवर फिटिंग कब आया? लेट्स सपोज कि मेरा यहां पर जो ट्रेनिंग एरर था, ठीक है, लेट मी चेंज माय कलर। जो मेरा ट्रेनिंग एरर था, दैट इज कमिंग ऑन दिस लाइन डायरेक्टली। वो मेरा इस लाइन पे ही आ रहा है सीधा। राइट। सीधा ऐसे लाइन पे ही बन रहा है। सो जब मेरा इस लाइन पे ही आ जाएगा सीधा, मैंने क्या बोला कि जब हमारा जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग एरर होना चाहिए, दोनों लाइन के पास होना चाहिए। अगर वो लाइन से दूर है देन इट इज गोइंग टू बी अंडर फिटिंग, अगर वो लाइन के ऊपर आ गया देन इट इज गोइंग टू बी और ओवर फिटिंग। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग एरर था, ट्रेनिंग एरर, जो ये ट्रेनिंग एरर था, ये तो मेरा जीरो हो गया ना। दैट ट्रेनिंग एरर इज कॉरेस्पेंडेंस टू वी कैन से जीरो डायरेक्टली। राइट। सो इट मीन्स दैट इट इज हैविंग low bias, low bias, and it is having high variance. राइट। लो बायस हो गया या फिर हाई वेरिएंस हो गया इसके ऊपर, राइट, ट्रेनिंग एरर के ऊपर, वो भी हाई हो गया मेरा यहाँ पे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ओवर फिटिंग। राइट। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ओवर फिटिंग। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, जहां पे अब ये मेरी लाइन है, राइट, ये मेरी लाइन थी। अब मेरा कुछ जो ट्रेनिंग एरर है वो लाई कर रहा है इस तरीके से। राइट। इस तरीके से मेरा ट्रेनिंग एरर लाई करा, और जो मेरा टेस्टिंग एरर है, यानी कि जो मेरा बायस है, वो भी कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है। राइट। इस तरीके से वो भी कुछ लाई कर रहा है। इट मीन्स क्या कि यहां पे मेरी दोनों चीजें लो हैं। आई एम हैविंग लो बायस एंड लो वेरिएंस। राइट। तो इस तरीके के मॉडल को बोला जाता है जनरलाइज्ड मॉडल, और यही हमें चाहिए होता है। राइट। अभी समझ में आया सबको? डिड यू गॉट ऑल थ्री पॉइंट्स कि कब क्या होना चाहिए, कब क्या होता है? Have- अभी समझ में आया? इफ यस प्लीज ड्रॉप यस इन द चैट बॉक्स, और यू कैन यूज थम्स अप एवरीवन। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ गया सबको समझ में? शुड वी मूव अहेड? यस एवरीवन, चले आगे। ओके डन। ठीक है। नाउ जस्ट हैव अ लुक। चलो अभी तो अभी सबने बोला कि समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है। नाउ आई विल शो दिस थिंग। ठीक है। अब नाउ आई विल क्रिएट थ्री डिफरेंट मॉडल्स। राइट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज माई मॉडल नंबर वन। दिस इज गोइंग टू बी माई
मॉडल 1, राइट। जहां पे मेरा बोलता है कि मेरा ट्रेनिंग एरर, ठीक है, ट्रेनिंग, इसको मैं उसी से लिख देता हूँ, उसी सेम कलर से, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रेनिंग एरर एंड टेस्टिंग, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी माई, पहले ट्रेनिंग एरर, ट्रेनिंग एरर, ट्रेनिंग एरर, right? Now then it is going to be testing error, testing error, and then testing error, right? This is my model 2, model 2, this is my model, model 3, right? तो अब ट्रेनिंग एरर जो था, that is in this one, it is about, we can say 2%, in this it is about 25%, and this it is about uh, we can say 10%, right? इसके अंदर जो टेस्टिंग एरर है दैट इज अबाउट 25%, इसके अंदर दैट इज अबाउट 26%, इसके अंदर इट इज अबाउट 10%, राइट। नाउ यू ऑल हैव टू डिसाइड कि कौन सा मॉडल अंडर फिटिंग है, कौन सा मॉडल ओवर फिटेड है, एंड विच मॉडल इज जनरलाइज्ड वन, राइट। सो यू हैव टू लुक फॉर दिस। नाउ ड्रॉप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, आप यहां से देख भी सकते हो, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं मैं, सो so that it can appear on the full screen. Now you have to answer like this कि model 1 is equals to like generalized, model 2 is equals to ऐसे, so you have to answer like this, तो एक ही लाइन में तीनों आंसर होना चाहिए। Now drop your answers, I'm looking over the chat box. Okay, okay, Chirag says, Chirag, I want all the answers for all the models in a single message. Okay. Till then I will have my water. Okay, I got my first answer from Gayatri. She says model 1 is overfitting, model 2 is underfitting, and the model 3 is generalized model. Right. Model 1, okay, Mehul says M1 overfitting, M2 underfitting, M3 generalized. Ruchika says first overfitting, second underfitting, third generalized. Apurva says M1 overfitting, M2 underfitting. She don't know about M3. Right, Apurva? Okay, she wrote right now. M3 is equals to generalized. Shivam also says the same. Shivam also says the no. Shivam is saying model 3 is generalized, model 2 is overfitting, model 1 is underfitting. Okay. Chirag is saying model 1 is overfitting, model 2 is underfitting, model 3 is generalized. ठीक है. Okay. Yashvi says overfitting generalized, model 2 is generalized and model 3 is underfitting. Okay, that's interesting. Okay, Nitin says model 1 is overfitting, model 2 is underfitting, and model 3 is generalized model. Yes. So those who are giving the answer, that is model 1 is overfitting, model 2 is underfitting, and the model 3 is generalized one. They are correct. Now let's have a look that how. See, model 1 में क्या बोला था कि टेस्टिंग एरर इज ओनली 2%, राइट। तो टेस्टिंग एरर 2% है एंड ट्रेनिंग एरर इज 25%। तो 2% इज लो, राइट, एंड 25% इज हाई, राइट। अब लो किस में है और हाई किस में है, तो देखो ओवरफिटिंग में लो है ट्रेनिंग एरर, दैट इज कॉल्ड टू बी योर बायस, और टेस्टिंग एरर हाई है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेरिएंस। सो दिस वन इज कॉल्ड टू बी द ओवरफिटिंग, right? Now coming towards this model 2, that says testing error is 25 and
सॉरी, ट्रेनिंग एरर इज 25 एंड टेस्टिंग एरर इज 26, राइट? तो देखो, टेस्टिंग एरर हाई है, यहाँ पे ये भी हाई है और ये भी हाई है, ठीक है? दोनों हाई कहाँ है? इसके अंदर है, अंडर फिटिंग के अंदर। ये भी हाई है, बायस भी हाई है, वेरिएंस भी हाई है, तो दिस मॉडल इज कॉल्ड टू बी अंडर फिटिंग, राइट? एंड इसके अंदर दोनों मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम, तो दिस इज कॉल्ड टू बी द जनरलाइज्ड वन, राइट? अभी समझ में आ गया सबको? इफ यस प्लीज you can use the thumbs up. Yeah, okay, I have got one, right? Okay, multiples. Okay, right. Done. Okay, okay. Great. So we should move ahead, right? सो अब हमारे पास ये तीनों चीजें हमें पता चल गई दैट व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ, कि कौन सा मेरे पास ओवरफिटिंग होगा, कब मेरा ओवरफिटिंग होगा मॉडल, कब मेरा मॉडल अंडर फिटेड होगा और कब मेरा जनरलाइज मॉडल बनेगा, राइट? सो दिस वाज द मेन सिनेरियो फॉर दिस थिंग। नाउ जस्ट हैव अ लुक कि फॉर एग्जांपल, अब चलते हैं दूसरा मॉडल बनाते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड टू बी योर रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है? सो दिस टाइम आई विल बी यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट, बेसिकली कम्स अंडर ensemble learning, right? So I will write here from sklearn dot ensemble import random forest, right? अब क्या गलती करा? Random forest is also right. Okay, sorry, this one is going to be random forest classifier, right? So we are going to use this random forest classifier. So again, I will create random forest model is equals to, I will copy this thing, classifier followed by this parenthesis itself, right? Now, in this parenthesis, we have to pass two scenarios that is called to be, first is called to be the n estimators, दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, first is called to be the n estimators and the second one is called to be your we can say the that random state, ताकि वो हमारा मिक्स होकर के आए। अब एज यूजुअल वी ऑल रिमेंबर्स दैट कि जब भी हम रैंडम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो रैंडम फॉरेस्ट हमारा कैसे क्या करता है? व्हाट डज दैट रैंडम फॉरेस्ट यूजुअली डू? इट टेक्स मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, राइट? ये हमारे पास मल्टीपल डिसीजन ट्रीज लेता है, राइट? और फिर उन सबसे वोटिंग सिस्टम करवाता है कि जो भी, जैसे इस डिसीजन ट्री ने बोला कि 60% एक्यूरेसी आया, इसने बोला 70% एक्यूरेसी आया, इसने बोला 70% एक्यूरेसी आया, राइट? तो जिसका भी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रहता है, ये रैंडम फॉरेस्ट उसको फाइनल आउटकम प्रोवाइड करता है। सो इट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को यूज करता है। तो इसके अंदर हम पहला आर्ग्यूमेंट वही पास करेंगे कि दैट हाउ मेनी डिसीजन ट्रीज यू वांट टू पास एट अ सिंगल टाइम। आई विल बी पासिंग ओवर हियर एन एस्टिमेटर्स that is going to be 100, let's suppose, and the random state is going to be 42, right? So these are going to be my scenario, right? अब after this I will again fit my model. अभी ये चीज क्लियर है ना सबको? दोनों चीजें क्लियर है यहाँ तक? If yes, please you can do thumbs up. Okay, okay, that's great. ठीक है? So after this, what I will be doing, I will be fitting my model, right? RF model is equals to model dot fit, right? Followed by this parenthesis, and then here I will be writing extreme, comma, y train, right? I will run this one, and after this, what I will be doing, I will be using my prediction, right? So I will be writing here RF predict, that is going to be RF underscore model dot predict, followed by this parenthesis, and here I will be passing that X test, right? Done. Done till here, ठीक है? अभी हमने मॉडल्स बना दिए सारे, राइट? मॉडल्स बन गए अब हमारे सारे। इज इट क्लियर टिल हियर टू फॉर एवरीवन? हमने मॉडल्स तक बना दिया, राइट? नाउ द थिंग्स कम्स ओवर हियर, राइट? वी हैव टू कंपेयर ऑल दीज मॉडल्स,
राइट। सो अब आओ देखते हैं एक और टॉपिक दैट इज कॉल्ड टू बी आर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। आई विल राइट ओवर हियर दैट दिस टॉपिक इज कॉल्ड टू बी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, राइट। सॉरी, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। आओ इसको देखते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, राइट। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अभी यहाँ पे कनेक्शन रीस्टोर लिखा हुआ आया, सो एम आई ऑडिबल और नॉट? आई थिंक माई इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। ओके, आई गॉट वन थम्स अप। ओके, ओके, आई एम ऑडिबल, इट मीन्स, राइट? Okay, thank you for the confirmation. So now just have a look for towards the performance metrics. So how many of you know about performance metrics, or we can say the confusion metrics? किस किस को पता है उस चीज के बारे में? Please be quick, fast. If you can do thumbs up directly if you know about that. अगर नहीं पता then you can type no. Okay, Nitin says yes. Okay, thank you Nikhil for the confirmation that I'm Nitin, that I'm audible. Okay. Okay, okay, okay. How many of you says yes, you know about this, and how many of you says you don't know about this? Okay, Parthu says that he don't know about that. Yashvi also says that she don't know about this. Okay, now let's have a look over the over our concept itself, right? Just allow me for a moment. Yeah. Now just have a look. For example, let's suppose we have created a model, and now we have to look, we have to check that whether that how we are going to now we have to check that how we are going to evaluate our model, specific model, ठीक। let's suppose मैंने अपना एक मॉडल बनाया है। now I have to check मॉडल क्रिएटेड, नाउ आई हैव टू चेक इवेल्युएट द मॉडल, ठीक है, कि वो मेरा मॉडल सही है या गलत प्रिडिक्शन दे रहा है, राइट। सो जस्ट हैव अ लुक, सी। अब फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन वन डेटा सेट, राइट, डेटा सेट। In that data set I am having some columns. Let's suppose x1, x2. X1 is having some value, x2 is having some value, right? And I'm having y and y predict, right? This is called to be my actual prediction, right? And this is called to be my we sorry, you can say actual model, and this is called to be my predicted model. इसका मतलब क्या कि ये मेरी वो वैल्यूज होंगी जो मेरे मॉडल ने जो मेरे मॉडल जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी, राइट। और ये वो होंगी जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करी होंगी। लेट्स सपोज दिस इज गोइंग टू बी 0 1 0 1 1 0 1, एंड हेयर इट इज गोइंग टू बी लाइक 1 1 0 1 1 एंड देन 1 देन 0, राइट। ऐसे मेरे पास कुछ वैल्यूज दी हुई है। नाउ जस्ट हैव अ लुक कि ये वाला मेरा एक्चुअल में क्या था, 0 था, और मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया कि वो 1 है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा रॉन्ग हो गया। दिस वन इज 1 1, दिस वन इज राइट, दिस वन इज ऑल्सो राइट, दिस वन इज ऑल्सो राइट, दिस वन इज ऑल्सो राइट, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। ये मेरे मॉडल ने प्रिडिक्शन करी। तो जब मेरे मॉडल ने प्रिडिक्शन करी तो जस्ट हैव अ लुक ओवर है, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, राइट। तो आउट ऑफ 7 इट इज सॉरी इट इज 3 आउट ऑफ 7, राइट। तो तीन सही करी, तीन गलत करी, और 7 आउट ऑफ 4, 7 आउट ऑफ 4 सही करी और थ्री थ्री गलत करे, ठीक है। तो इसने जो चार सही प्रिडिक्शन करी और तीन गलत प्रिडिक्शन करी, तो हाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। इसी चीज को देखते हैं। तो इसी चीज को देखने के लिए हम यूज करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, ठीक है। वी यूज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, राइट। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स में होता क्या है, दिस इज कॉल्ड टू बी आर 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। इसको 2x2 मैट्रिक्स बोला जाता है, विच मीन्स 1 0 एंड देन 1 0, 1 + 1, राइट। हेयर इट विल कम 1 वी कैन से दैट, चलो तो इसको और इजी करते हैं, राइट।
टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स होता है ये, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है। हेयर इट कम्स यस, हेयर इट कम्स नो, हेयर इट कम्स यस, हेयर इट कम्स नो। दिस इज माई एक्चुअल वन, this is one, my this is for the predicted one, right? Now let's suppose कि एक पेशेंट है, ठीक है, एंड दैट पेशेंट इज सेइंग दैट वन एक पर्सन है एंड दैट पर्सन इज सेइंग दैट ही इज डायबिटिक, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ऑल्सो सेज दैट यस यू आर डायबिटिक, तो इट मीन्स दैट बोथ द सिचुएशंस आर, अब उससे भी और आसान करते हैं, लेट मेक इट मोर मोर इजी। तो देखो सबसे पहले क्या करो कि जिधर फ्रॉम दिस प्रेडिक्टेड वाले में देखो, जहां पे यस लिखा है वहां पे लिख दो पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट, यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव पॉजिटिव, और जहां पे नो है वहां लिख दो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। अब लेट्स सपोज कि कोई पर्सन डॉक्टर के पास जाता है और वो बोलता है कि यस ही फील्स लाइक ही इज डायबिटिक, और वो डॉक्टर भी बोलता है यस यू आर डायबिटिक, देन इट इज गोइंग टू बी द ट्रू स्टेटमेंट। वो बोलता है कि यस ही फील्स लाइक ही इज डायबिटिक, बट डॉक्टर बोलता है नो यू आर नॉट डायबिटिक, देन इट इज गोइंग टू बी फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। अब एक और पर्सन जाता है, वो सोचता है कि नो ही इज नॉट डायबिटिक, बट डॉक्टर बोलता है यार यू आर डायबिटिक, देन इट इज गोइंग टू बी फॉल्स स्टेटमेंट। और डॉक्टर पैसेंजर जो पर्सन होता है वो सोचता है नो ही इज नॉट डायबिटिक, और डॉक्टर भी बोलता है नो यू आर नॉट डायबिटिक, इट मीन्स दिस सिचुएशन इज ट्रू। तो वो यहाँ पे ट्रू हो गया, राइट। अभी इतना सबको समझ में आया, क्लियर हुआ इतना कि कैसे बना हमारा ये चीज, राइट, क्लियर हुआ। सो दिस इज हाउ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज जनरेटेड, राइट। अब इसके अंदर तीन चीजें होती है, तीन चार चीजें होती है वैसे तो multiple चीजें होती हैं, लेट्स सपोज। अब इसके अंदर हमारे पास सेवरल सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड टू बी आर एक्यूरेसी, ठीक है, इवेल्युएशन मेथड, एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्यूरेसी जब हम करते हैं तो अब हम उसको लिखते हैं, ये दोनों दोनों टीपी वाले, टी टी वाले दोनों ट्रू वाले, ठीक है। सो आई विल राइट हेयर टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टोटल, सॉरी फॉर दैट। अब ये टोटल का मतलब क्या, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। टोटल मींस that it is going to be written like this TP plus TN divided by all of these four, which means TP plus FN plus FP plus TN। इसका मतलब ये हुआ। तो ये होता है एक्यूरेसी का फॉर्मूला। तो जो हम यहाँ पे एक्यूरेसी फाइंड करी थी ना हमने अभी, जो इस मॉडल की एक्यूरेसी फाइंड करी थी, वो इसी फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट करी जाती है वहां पे, राइट। सॉरी फॉर दैट। अब ऐसे ही हमारा एक और सिनेरियो आता है। अब लेट्स सपोज, अब ये मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था सबसे, इसी इस क्लास की स्टार्टिंग में पूछा था मैंने, इसी सेशन के स्टार्टिंग में सबसे क्वेश्चन पूछा था दैट इज ओनली एक्यूरेसी सफिशिएंट फॉर ऑल द एल्गोरिदम्स, कि क्या एक्यूरेसी निकालने से काम चल जाएगा सबका। जस्ट ड्रॉप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ओके, नो, सोम says no, Yashvi says no, Parthu says, Parthu doesn't say anything. Shubham says no. Okay, Shivam says okay. Chirag says no. या नहीं चलेगा काम, राइट। तो वी हैव सेवरल डिफरेंट मेथड्स एज वेल। फॉर एग्जांपल अब क्यों नहीं चलेगा अब वो देखते हैं, राइट। मान के चलो मेरे पास एक डेटा सेट है, डेटा सेट है जिसमें टोटल 1000 रोज है, राइट। अब इस 1000 में से दो चीजें हैं, दो कैटेगरी है इसके अंदर, एक है जीरो की और एक है वन की। तो जो जीरो की कैटेगरी है उसमें मेरे पास 900 रोज जीरो की है, और सिर्फ 100 रोज जो है वो वन की है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डेटा।
क्या सोच रहे हो आप इस डेटा सेट के बारे में, क्या सोच रहे हो आप? ड्रॉप योर आंसर्स, आई एम लुकिंग फॉर दैट। ये शुभम, यू आर राइट, विल बी एडिंग दैट। नितिन सेज imbalanced, ओके, यस नितिन यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नाउ जस्ट हैव अ लुक, व्हाट डज इट मींस? इट मींस बेसिकली कि ये डेटा जो है मेरा, दैट इज बायस्ड, राइट? दिस इज माय बायस्ड डेटा। डेटा सेट ही बायस्ड है हमारा, जीरो की तरफ है, राइट? अब अगर मैं इस डेटा सेट के ऊपर एक्यूरेसी निकालूंगा, देन इट इज डायरेक्टली, अगर मैं जीरो की एक्यूरेसी निकालता हूँ, देन इट इज डायरेक्टली कमिंग अराउंड 90%। 90% आ जाएगा, बिकॉज 900 डेटा तो मेरा वही है, 900 रोज तो वही है, जीरो की है, राइट? तो मेरा सीधा यही हो गया, 90% हो गया। तो जब भी मेरा इम्बेलेंस्ड डेटा सेट होता है ना, तो उसके ऊपर हम एक्यूरेसी फाइंड आउट नहीं करते हैं। वी लुक फॉर टू थिंग्स, प्रिसीजन एंड रिकॉल। ये दो चीजों के ऊपर देखा जाता है, ठीक है? अब प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ठीक है, चलो यहाँ पे भी बना देता हूँ मैं। दिस वाज माय कंफ्यूजन मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2। यहाँ था ट्रू, व्हाट वाज दैट, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, राइट? ऐसे था। ये एक्चुअल था, ये मेरा प्रिडिक्टेड वन था। ठीक है, अब देखो, तो अब प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिसीजन, और दूसरा होता है हमारा रिकॉल। ठीक है, तो प्रिसीजन का फॉर्मूला हमारा होता है टीपी डिवाइडेड बाय प्रिडिक्टेड। यहाँ पे ये यस, यहाँ पे ये नो, यहाँ पे ये वाला यस, यहाँ पे ये वाला नो। ठीक से ही बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यस नो, यस नो, दिस वन इज माय प्रिडिक्टेड वन, दिस वन इज माय एक्चुअल वन। ठीक है, अब तो टीपी का जो प्रिसीजन का फॉर्मूला हुआ, ठीक है, तो प्रिसीजन का फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय योर प्रिडिक्टेड यस, राइट? आई विल राइट हियर प्रिडिक्टेड यस। और प्रिसीजन और रिकॉल का फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस। अब देखो क्या, प्रिडिक्टेड यस का मतलब क्या, कि ये वाले दोनों, राइट? क्या मेरे ये वाले दोनों पॉइंट्स, प्रिडिक्टेड यस, ये प्रिडिक्टेड और इसका ये पूरा यस, तो इसको हम लिखेंगे, इट्स गोइंग टू बी टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, और एक्चुअल यस, तो एक्चुअल यस का क्या हो गया? एक्चुअल यस का हो गया हमारा ये वाले दोनों, ये वाले दोनों, राइट? एक्चुअल हमारा ये है, तो एक्चुअल का यस ये हुआ, राइट? तो इसको हम लिखेंगे टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन, फॉल्स नेगेटिव। भी यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस यस एवरीवन प्लीज reply in the chat box. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, okay, I'm getting the thumbs up as well, right? So it means that it is clear to you everyone as well till here. ठीक है, अब देखो, अब दोनों चीजें होगी, ठीक है? तो अब प्रिसीजन बेसिकली, चलो देखते हैं कि होता क्या है। तो प्रिसीजन को हम बेसिकली बोलते हैं दैट आउट ऑफ ऑल द प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स, राइट, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली प्रिडिक्टेड। ठीक है, देख लेता हूँ इधर। बेसिकली प्रिसीजन को हम बोलते हैं आउट ऑफ ऑल द प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली प्रिडिक्टेड, राइट? तो इसके अंदर जो हम देखते हैं ना, वो हम देखते हैं इसके अंदर टीपी, यानी कि ट्रू पॉजिटिव रेट जो होना चाहिए वो हमारा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
ये देखो था ना इसका, ये जो फॉर्मूला था ना टीपी और ये एफपी, तो इसमें जो है ना टीपी हमारा ज्यादा होना चाहिए, जो और जो हमारा एफपी है वो कम होना चाहिए। राइट, करेक्ट। इसमें हमें फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना होता है, और ये हमारा इंक्रीज, इसको हमारा हम ये इंक्रीज ही रहता है, ये ज्यादा रहेगा तो ही ज्यादा अच्छा है। और फॉल्स पॉजिटिव रेट को हम जितना कम कर सकते हैं हमें उतना कम करना होता है प्रिसीजन के अंदर। राइट। नाउ अब ऐसे ही रिकॉल के अंदर देखते हैं। व्हेन कम इट कम्स टू रिकॉल, रिकॉल मींस आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल रिजल्ट्स। राइट। प्रिसीजन में क्या था? आउट ऑफ ऑल द प्रिडिक्टेड, यहाँ पे लिख भी देता हूं प्रिडिक्टेड, और यहाँ पे आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल। राइट, आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल्स हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली प्रिडिक्टेड। राइट। यहाँ पे दो सिनेरियोज है। तो जब एक्चुअल में आता है तो क्या होता है इसके अंदर हमारा, कि टीपी तो हमेशा ज्यादा ही रहना चाहिए, बट हम किस पे ट्राई करते हैं कि ये जो हमारा एफ एन है, ये एफ एन कम होना चाहिए। राइट। एफ एन हम जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना हम एफ एन को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? ये सो नो? यस एवरीवन, प्लीज बी फास्ट। ठीक है, डन। चलो, अभी देखो, अब क्वेश्चन कम्स ओवर हियर दैट व्हेन वी हैव टू यूज प्रिसीजन एंड व्हेन वी हैव टू यूज रिकॉल। ठीक है, अब हमें ये दोनों कब यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। राइट। सिनेरियो कम्स ओवर हियर, मान करके चलो कि हम एक स्पैम क्लासिफिकेशन का लेते हैं एग्जांपल, क्लासिफिकेशन। राइट। अब जब हम स्पैम क्लासिफिकेशन के अंदर जाते हैं तो बताओ इसके अंदर हम क्या लेंगे, किसके साथ मूव ऑन करेंगे, प्रिसीजन के साथ या फिर रिकॉल के साथ? विच ऑन विच वी हैव टू फोकस, एफपी और एफएन, किसके ऊपर फोकस करेंगे बताओ? बी फास्ट एवरीवन। ओके, नितिन इज सेइंग रिकॉल। ठीक है, शिवम इज सेइंग रिकॉल। ठीक है, ठीक है, एवरीवन इज सेइंग रिकॉल, रिकॉल। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, अब लेट्स सपोज मान करके चलो। ठीक है, इसमें तीन सिनेरियो बनाता हूं मैं। ठीक है, इसमें मैं तीन सिनेरियो बनाता हूं कि मेरे पास मेल आई। ठीक है, वी गॉट द मेल। ठीक है, मेल आई मेरे पास। तो जब मेरे पास मेल आई, ठीक है, और जो मेल आई वो मेरी स्पैम मेल थी। ठीक है, और वो सीधा स्पैम में चली गई। राइट। और मेरे मॉडल ने भी यही बोला, मेरे मॉडल ने भी बोला कि ये आपकी स्पैम मेल है। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर मी। ठीक है ना, कि मेरा मॉडल पहले ही पहचान गया, वेरी गुड। ठीक है ना, कि मान के चलो कि हमारे पास कोई एक मेल आई और वो स्पैम मेल थी और वो मेरे स्पैम फोल्डर में चली गई, और मेरे मॉडल ने भी यही बोला, प्रिडिक्ट करा उसने कि ये हमारी स्पैम स्पैम मेल है और इसको स्पैम में जाने दो। तो ये तो वेरी गुड सिचुएशन हुई हमारे लिए कि हमें अननेसेसरी किसी मेल को देखना नहीं पड़ा। ठीक है, अब आओ दूसरे कंडीशन पे। ठीक है, आई केम टू द सेकंड कंडीशन, जहां पे मेल आई। राइट, एंड इट गोज इनटू द स्पैम फोल्डर। ठीक है, राइट। और मेरे पास मेरा जो मॉडल था उसने बोला कि ये इट इज नॉट द स्पैम, वो स्पैम नहीं है। राइट। तो यहां पे भी काम चल जाएगा, इट विल वर्क, इट विल वर्क फॉर मी। राइट, कि अगर मेल मेल जो थी वो मेरी स्पैम मेल आई मेरे पास। ठीक है, और वो स्पैम में चली गई, बट मेरा मॉडल बोल रहा है कि नहीं वो स्पैम मेल नहीं है, उसने स्पैम में नहीं भेजा उसको। ठीक है, तो ठीक है, वो मेरे लिए ठीक है कि ठीक है फाइन है यार, कि अगर मैं देख सकता हूँ कि लाइक अगर ये इंपॉर्टेंट मेल नहीं है तो मैं उसको डाल दूंगा स्पैम फोल्डर में बाद में। राइट। बट अब देखो थर्ड कंडीशन, बट व्हाट इफ, कि अगर मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल जो थी वो मेरी चलेगी, वो मेरी स्पैम नहीं थी। ठीक है, माई मेल वॉज नॉट स्पैम, और मेरे मॉडल ने उसको स्पैम फोल्डर में डाल दिया। मेरी मीटिंग थी, मेरी कंपनी की मीटिंग थी लेट्स सपोज, जो कि स्पैम नहीं था, जो कि वो मेल स्पैम नहीं थी, बट मेरे मॉडल ने उसको स्पैम में डाल दिया। राइट। तो दिस इज गोइंग टू मेक अ वेरी बिग ब्लंडर फॉर मी। राइट।
अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि अब मैं कैसे इसको करूं। ठीक है, तो अब आओ इस सिनेरियो को समझते हैं, ये वाले सिनेरियो। ठीक है, तो ये कौन सा मेल था, ये कौन सा टाइम था, ये था मेरा एक्चुअल वाला, राइट, और ये था मेरा प्रिडिक्टेड वाला। यही था ना कि ये जो मेरे, ये तो एक्चुअल था और ये मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट करा कि नहीं ये आपका मेल जो है स्पैम में जाना चाहिए। अब यहाँ तो ब्लंडर हो गया मेरे साथ, राइट। अब आओ इसको देखते हैं कि ये क्या बनेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं अपना एक ये बनाता हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ, राइट। ये बनाया मैंने अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दैट इज गोइंग टू बी यस नो, यस नो, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अब देखना, अब मैंने ये बना दिया। अब ये एक्चुअल वाला क्या था, एक्चुअल वाला मेरा क्या था कि मेल आपकी स्पैम में जाएगी। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये लो, रुको। हम्म, ठीक है, ना अभी देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये स्पैम, ये नॉट स्पैम, सॉरी, ये नॉट स्पैम, ये स्पैम, ये नॉट स्पैम। ठीक है, ये मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, मेरे इसने मॉडल ने बोला था, मॉडल मॉडल जो मैंने बोला था, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी, नॉट स्पैम थी। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू थी एक्चुअल में की नॉट स्पैम थी, यानी ये वाला था, राइट। और प्रिडिक्टेड में की क्या थी कि वो स्पैम थी, तो प्रिडिक्टेड में की क्या थी, वो स्पैम थी, ये वाला सिनेरियो आया। ठीक है, तो अब ये वाले सिनेरियो के अंदर जब आया तो टीपी और एफपी देखा गया, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव देखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब फॉल्स पॉजिटिव देखा जा रहा है तो फॉल्स पॉजिटिव किसके फॉर्मूले में आ रहा था, लेट्स हैव अ लुक। फॉल्स पॉजिटिव आ रहा था हमारे प्रिसीजन के फॉर्मूले में, इसमें तो फॉल्स नेगेटिव आ रहा था। अब समझ में आया कि कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे प्रिसीजन। ठीक है, दैट इज टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पे प्रिसीजन यूज होगा। अभी क्लियर हुआ सबको, अभी क्लियर हुआ, यस और नो, राइट। अभी समझ में आया कि कैसे यूज होगा, कौन सा यूज होगा। अब जितने बोल रहे थे कि रिकॉल यूज होगा, रिकॉल यूज होगा, हो गया गलत। यस, 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 चलो, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक और सिनेरियो ले लेता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, उसकी एक और सिनेरियो ले लेता हूँ मैं, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो मेरा पर्सन है, ठीक है, जो मेरा पर्सन है, राइट, दैट इज नॉट डायबिटिक। ठीक है, और जो डॉक्टर है मेरा मॉडल है, ठीक है, वो भी प्रिडिक्ट करता है दैट ही इज नॉट डायबिटिक। तो इट इज वेरी विन विन सिचुएशन फॉर मी, वेरी गुड, राइट। अब एक और ले लेते हैं सिनेरियो कि जहां पे पर्सन जो है वो थिंक कर रहा है दैट ही इज डायबिटिक, जो वो बोल रहा है कि नो ही इज नॉट डायबिटिक, लेट्स सपोज। ठीक है, और आपका मॉडल बोल देता है दैट ही इज डायबिटिक। ठीक है, मॉडल ने बोल दिया दैट ही इज डायबिटिक बट वो पर्सन वाज नॉट डायबिटिक। तो चलो, दिस सिचुएशन विल आल्सो वर्क फॉर मी। ठीक है, ये मेरे लिए फिर भी चल जाएगा कि मैं जाकर के टेस्ट करा लूंगा, राइट। बट व्हाट इफ योर दैट पर्सन वाज नॉट डायबिटिक, सॉरी, what if the person was diabetic and your model says that you are not diabetic, then it's going to be a very big blunder for me, right? ये ब्लंडर हो गया एक बहुत बड़ा। तो आओ अब इसको देखते हैं, ये एक्चुअल था, ये प्रिडिक्टेड था, राइट। अब मैं अपना वो बनाता हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, टीपी, एफपी, एफएन, टीएन, राइट। डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, ये प्रिडिक्टेड वाला, ये एक्चुअल वाला। ठीक है, ये वाली साइड एक्चुअल वाली, ये वाली साइड प्रिडिक्टेड वाली। अब यहाँ पे क्या बोला था इसने, यहाँ पे इसने बोला कि ये एक्चुअल वाला जो था वो डायबिटिक था,
चलो ये एक्चुअल वाला जो था वो डायबिटिक था, और जो डायबिटिक नहीं था दैट वाज प्रिडिक्टेड वन। तो ये प्रिडिक्टेड वाला नॉन डायबिटिक था, ये मेरे मॉडल ने ये प्रिडिक्ट कर दिया। तो इसमें देखो क्या प्रिडिक्ट हो गया, टीपी प्लस एफएन के ऊपर वर्क करा हमने, फॉल्स नेगेटिव के ऊपर, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे क्या यूज होगा, रिकॉल यूज होगा, दैट इज टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव को देखा जाएगा, राइट। अभी समझ में आया कि कब क्या यूज होगा दोनों में से, अभी आया सबको समझ में, यस और नो एवरीवन, पक्का आ गया समझ में, राइट राइट राइट, आ गया, ओके। चलो अभी कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं जल्दी जल्दी, कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। आओ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको करूंगा स्टार्ट, इसको इवेलुएट करना सारे अपने उसको, राइट। सो आई विल इंपोर्ट माई लाइब्रेरी फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है हो गया। नाउ अभी मैं एक्यूरेसी चेक करता हूँ अपना फटाफट से सबका। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक्यूरेसी, लॉजिस्टिक एल आर लिख देते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर फॉलोड बाय दिस पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपनी दो चीजें, क्या था, फर्स्ट वाज एल आर प्रिडिक्ट, ठीक है, एल आर प्रिडिक्ट कॉमा बाय टेस्ट, राइट। सेकंड में मैं डाल देता हूँ अपना, इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे को। अब यहाँ पे एल आर की जगह पे लिख देते हैं के एन एन यहाँ पे लिख देते हैं के एन एन प्रिडिक्ट, ठीक है। फिर एक बार और पेस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं हम अपना रैंडम फॉरेस्ट, नहीं डी टी, देन आई विल राइट ओवर हेयर डी टी, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं पेस्ट करके RF, रैंडम फॉरेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं रैंडम फॉरेस्ट, राइट। अब सबकी ये प्रिंट कर लेते हैं चारों की चारों। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ LR एक्यूरेसी, राइट, इसको प्रिंट करता हूँ तो इसकी आई 0.81। नेक्स्ट लिखते हैं के एन एन, इसकी आई 0.70। देन हम लिखते हैं डी टी की आई 0.78, और आर एफ की आई 0.81, राइट। अब ये हमारे पास सबकी एक्यूरेसी निकल करके आ गई, यानी कि हमने इवेल्युएट कर लिया कि इतना परसेंट मॉडल मेरा एक्यूरेट है। यानी कि जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिदम लगाया तो इट सेज कि मेरा 81% मॉडल एक्यूरेट है, के बोलता है मेरा 70% मॉडल एक्यूरेट है, डिसीजन ट्री बोलता है मेरा 78% मॉडल एक्यूरेट है, और रैंडम फॉरेस्ट बोलता है कि इट इज हैविंग 81% एक्यूरेसी, राइट। अब जब मेरा सब कुछ पता चल गया, ठीक है, हमने कंपेयर भी कर लिया कि कौन सा मेरा मॉडल बेस्ट है, तो विच ऑल ऑफ दीज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज विच वन यू थिंक दैट विच इज द बेस्ट मॉडल, कौन सा है मॉडल बेस्ट बताओ। यस एवरीवन, यू कैन यूज द चैट बॉक्स। RF, random forest, logistic and random forest. Okay, LR and RF. Yashvi says LR and RF. Okay, I got multiple answers. Sir, then when recall is used, मिल गया ना आंसर नितिन, कि रिकॉल कब यूज्ड होगा। रिकॉल का दिया मैंने एग्जांपल, राइट, यू वर देयर एट दैट टाइम, ओके। पार्थू LR and RF, सोहम यस, ओके ओके नितिन, ओके यस, ठीक है, राइट। तो LR and RF आर हैविंग मोस्ट सुटेबल आंसर्स, राइट। नाउ जस्ट हैव अ लुक कि चलो हम एक और चीज देख लेते हैं, राइट। तो मैं एक वो बना लेता हूँ कि मेरे कौन कौन से सरवाइव थे या फिर कौन कौन से डाइड नहीं थे, सरवाइव नहीं करे उसके अंदर, ठीक है। तो वो भी बना लेते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वो बनाता हूँ, लेट्स सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी PL, प्रिडिक्टेड लेबल्स, मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन दैट आई विल बी राइटिंग survived
ये जो पर्सन सर्वाइव हुए उनके लिए लिखा मैंने कि ये बोलेगा सर्वाइव इफ 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 माई प्रिडिक्शन, राइट, इफ माई प्रिडिक्शन इज डबल इक्वल्स टू वन, राइट, और else it will say that they are not survived, not survived, right? They are going to say this thing. Now for prediction in we can say this one, LR predict, right? इसके अंदर देखते हैं पहले, it's going to be LR prediction, right? So I will be writing here LR underscore predict for this thing. Okay, I have to enter write more things, right? ठीक है, ये दिया मैंने। अब इसके अंदर अब हम डेटा पास करेंगे। लेट्स सपोज कि हम एक्स टेस्ट ही पास करते हैं या फिर वाई टेस्ट ही पास कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक्स टेस्ट पास करते हैं। तो जब एक्स टेस्ट पास करेंगे, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। अगर मैं इसके अंदर, ये मेरे पास डेटा था, ये मेरे पास एक डेटा था एक्स टेस्ट करके, ठीक है। अब इसको मैंने एक जगह यूज करा इवेल्युएशन के लिए, राइट, और मैं इसको दूसरी जगह यूज करना चाहता हूँ फॉर द मेकिंग द प्रिडिक्शंस, कि मेरे प्रिडिक्शन करके वैल्यूज कितनी आ रही है। तो अगर एक बार इसको मैंने यहाँ यूज कर दिया तो फिर यहाँ पे दूसरी बार यूज करने का सेंस नहीं बनता, राइट, क्योंकि वो तो फिर डेटा यूज हो गया ना एक बार ऑलरेडी यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो व्हाट विल डू, आई विल मेक हियर रिजल्ट ऑफ दिस, वी कैन से दैट I will directly write result, right? R is equals to, let's suppose I will write here x underscore test dot copy बना लेता हूँ मैं इसका, ठीक है, right? I have created the copy for this. Let me bring it up. ये क्या करा मैंने, इसका कॉपी बना दिया, राइट। सो कॉपी बनाने के बाद what I will be doing, right? So what I will be doing over here, I will create a new thing that is called to be, अब मैं इसके अंदर स्टोर करूंगा एक न्यू कॉलम के अंदर, that R is going to be stored in a new column that is called to be prediction. प्रिडिक्शन करके मैंने एक नया कॉलम बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं किसको सेव कर रहा हूँ, मैं अपने इसके अंदर मैं सेव करूंगा इज इक्वल्स टू PL, ये जो मैंने ये पूरा का पूरा बनाया ये जा करके इस कॉलम के अंदर सेव हो जाएगा, प्रिडिक्शन वाले कॉलम के अंदर, राइट। और नाउ अब आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, अब मैं अपना रिजल्ट प्रिंट करूंगा, ठीक, ठीक है। So I will write here print followed by this thing, and in this I will pass my result along with this parenthesis, and in and sorry, and this parenthesis, ठीक है, and in this parenthesis I will write prediction, right here. Now इसको प्रिंट करूंगा तो now you can have a look कि ये दिखा रहा है that you are having these passengers are having these passengers are not survived and these passengers are survived in this scenario. अभी समझ में आया इतना सबको? Have you got these points? Yes or no? You can use the thumbs ups as well. ठीक है, डन 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 डन, आया समझ में, आया समझ में, राइट 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 राइट, ठीक है, डन। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे इट इज शोइंग यू 179 रोज एंड वन कॉलम। तो 179 रोज ही क्यों दिखा रहा है यहाँ? तो हमने हमने हमारे पास तो 891 रोज थी ना, बट 179 क्यों दिखा रहा है? व्हाई इट इज शोइंग लाइक दैट? एनी आइडिया अबाउट दिस? यस और नो, डायरेक्टली यस और नो लिख दो, फिर मैं बता दूंगा आंसर। ओके, नो 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 नो, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जब हमने डेटा को डिवाइड करा था तो डेटा वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ना, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग में तो 70% ही डेटा बचा था ना, राइट। तो 891 का अगर 70% निकालोगे दैट इज अराउंड 173 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 170 अरे 178 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 179 के आसपास ही आया ना। समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू 179,
अभी समझ में आ गया? सिंपल सा था। हाँ, सॉरी सॉरी, इसका 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 निकालोगे तो टेस्टिंग का, टेस्टिंग 20% था ना, और ये 80% था, और ये 20% था, तो इसका 891 का 20% आपका 179 ही तो हुआ, राइट? चलो, तो दिस वाज द सिनेरियो, राइट? अब आते हैं अपने करियर रेडीनेस के पार्ट पे। ये हमने समझ लिया, इवेल्युएशन हमने से देख लिया, ठीक है, एआई करियर रेडीनेस। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई करियर रेडीनेस मैटर्स टुडे अ लॉट? बताओ, एवरीवन, टेल मी अबाउट दिस थिंग। एनी आइडिया अबाउट दिस? yes or no, directly, right? Yes or no? ओके, यस यस यस। यस, अगर सिंपल सा कंसेप्ट है, मान के चलो कि अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो करियर पाथ जो था वो काफी सिंपल होता था, राइट? सो यू स्टडी, यू गेट अ डिग्री, यू गेट अ जॉब एंड स्टे देयर फॉर मेनी इयर्स। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे एचआर आर डिमांडिंग फॉर द स्किल्स, नॉट फॉर द डिग्रीज, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, वी हैव लर्नड एआई, वी आर लर्निंग एआई, ठीक है, ताकि हम अपने फ्यूचर जॉब रोल्स पे अपने आप पे वर्कआउट कर सके, जो भी हमारे इन डिमांडिंग स्किल्स है उसके ऊपर वर्कआउट कर सके, अपने करियर को अच्छे से प्लान कर सकें। फॉर ऑल दीज थिंग्स वी आर वर्किंग अ लॉट, राइट? फॉर गेटिंग आर गुड स्किल्स एंड गुड डिग्रीज एज वेल, वी कैन से, राइट? अब देखो, जैसे था स्मार्ट लर्निंग एंड रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आप गूगल पे जा रहे हो, राइट? आप गूगल पे जा रहे हो और वहां पे बहुत सारी चीजें सर्च कर रहे हो, ठीक है? आई विल मूव बैक, राइट? लेट्स सपोज कि आप गूगल पे जा रहे हो और बहुत सारी चीजें सर्च कर रहे हो कि कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सी डिग्री नहीं चाहिए, और लेट्स सपोज आई एम मूविंग डायरेक्टली मूविंग टू चैट जीपीटी, ठीक है? मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और चैट जीपीटी को सीधा एक कमांड देता हूँ कि प्लीज टेल मी इंफॉर्मेशन, प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन, मी द इंफॉर्मेशन related to the AI domain in a structured मैनर, राइट? तो नाउ जस्ट यू कैन हैव अ लुक कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर उसने पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन का आपको ओवरव्यू दे दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कब कब वो आया, क्या चीजें थी, ठीक है, कौन कौन से उसके मेजर रोल्स हुए, वो किस काम आ सकता है, आपका जॉब रेडी जो फ्यूचर क्या है। तो इस सारी चीजों के अकॉर्डिंग वो आपको वर्कआउट करवा सकता है। तो रेदर देन मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट टैब्स इन योर गूगल, यू कैन look for those things, or you can search in a smartest way, right? How many of you agree with this thing? Please, yes, type yes or no in the chat box. ये चीजें कर सकते हैं हम, right? Obviously we can do these things. Yes, can I have a look towards the chat box? Okay, Parthu is saying yes. Yashvi, Shubham agreed. Yeah, obviously we can do these things, right? So accordingly it works. So for example, let's move ahead, right? सो ऐसे ही अगर हम अपना रिज्यूम के ऊपर जाते हैं, लेट्स मूव टू अ रिज्यूम, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि आप लोगों के लिए भी एक वेरी यूजफुल स्टफ रहेगा। लेट्स सपोज आई मूव ओवर हियर, डिजिटल मार्केटिंग सीवी, आई सर्च फॉर दिस थिंग, ठीक है? मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीवी के लिए सर्च करा, कोई भी एक रिज्यूम ले लिया, लेट्स सपोज आई कॉपीड दिस थिंग, राइट? आई पेस्टेड ओवर हियर, और यहाँ पे अगर मैं अपना कमांड दे दूं, राइट? इफ आई विल गिव माई कमांड कि इसको मेरे को अपग्रेड करना है, या फिर वी कैन से कि मोर इसको टेक स्पेसिफिक रिज्यूम बनाना है, सो इफ आई विल राइट हियर, प्लीज क्रिएट अ रिज्यूम similar similar to this, but it should be more tech side along with the soft skills as well, राइट? अगर मैं इसको ये कमांड देता हूँ, नाउ यू कैन हैव अ लुक कि ये मेरे को एक नया रिज्यूम बना करके देगा, सिमिलर टू दैट ओनली, बट इट विल बी हैविंग मोर ओवर टुवर्ड्स द टेक्निकल साइड along with the सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। देखो, अब इसके अंदर मैंने खुद से चीजें ऐड करी, सी हाउ इट इज क्रिएटिंग। अब यहाँ पे जो मैंने रिज्यूम डाला था दैट वाज मोर ओवर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, बट
it is giving me according to my role. That is a lead AI, or we can say the machine learning engineer, although it has written wrong. Okay. So accordingly, it is working. See how it is creating your resumes as well. So instead of that as well, अगर आपको एक अच्छा सीवी बनाना है, अगर आपको एक अच्छा ATS फ्रेंडली सीवी बनाना है, तो you can follow these two things. First is overleaf, right? This one, overleaf, and the second one is called to be the flow CV. Flow CV, right? Yes, this is the second one. मैं ये दोनों का लिंक चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर जाकर के अपना सीवी बना सकते हो. इट्स गोइंग टू बी टोटली ATS friendly CV. You will be getting that. Okay, it's just give me a moment. Yeah, you can have a look in the chat box. I have dropped the links over there. ठीक है. तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप जाकर के आराम से अपना पूरा का पूरा सीवी जो है वो रेडी कर सकते हो, राइट, एंड बाय टेकिंग द हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी इटसेल्फ, राइट. नाउ मूविंग अहेड, you will be getting create without coding itself, which we have already covered, कि आप यहाँ पे एप्स वगैरह बना सकते हो. मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, दैट इज गोइंग टू बी opal.google. अगर आप यहाँ पे जाओगे तो easily you can create a single app, or we can say multiple apps without writing a single line of a code, just by giving a prompt itself, right. ये भी मैं लिंक आपको दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, for creating the applications without coding, right. ये भी मैंने दे दिया. Now moving to the one more thing that is very much important, interview practice and communication skills. What do you think about this? Yes, everyone, is it important or not? Yeah, I have dropped the link in the chat box only, Shubham. Please have a look towards the everyone chat box. Sorry for that. Right? Yeah, it is important. It is important, right? Yes, obviously that is very much important. Now, for this thing, I'm having one more. Just allow me for a moment. Don't scan right now, right? अभी स्कैन मत करना. Just wait. Okay. So, interview practice is very much important for everyone, right? So I am giving you one thing that is going to be or very much important for you all. So you can scan this QR code, right? You will scan karo QR code everyone, and you will came to know a website. I am dropping the link in the chat box as well. You can have a look. That is called to be Yodlee. I have dropped in the chat box as well for preparing your preparing. You can prepare for your interviews, right? यू कैन हैव अ लुक नाउ. अभी देखो यहाँ पे जब आप जाओगे साइन इन करने के बाद यू विल बी ऑन दिस पेज. व्हेन यू विल मूव टू दिस प्रैक्टिस सेक्शन, आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखेगा, इंटरव्यू दिखेगा. सो वंस यू विल क्लिक ऑन दैट इंटरव्यू ऑप्शन, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा. अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस तरीके का आपको इंटरव्यू देना है, बिहेवियरल इंटरव्यू देना है, टेक्निकल इंटरव्यू देना है, राइट. फिर आप यहाँ से पर्सन सेलेक्ट कर सकते हो कि किसके साथ देना चाहते हो. राइट नाउ आई एम हैविंग वन सिंगल पर्सन ओवर हेयर, तो अपना रोल सेलेक्ट कर लो. यहाँ पे रोल लिख दो कि कौन सी चीज़ के लिए आपको रोल देना है. जैसे प्रोडक्ट मैनेजर के लिए आपको इंटरव्यू देना है, और कौन सी कंपनी के लिए देना है, लेट्स सपोज आपको गूगल के लिए देना है. एंड देन you can click on this get started button, and on that, once you will click on that, you will
there will be a person in front of you who will be letting you know about the stuffs कि कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो इन जनरल वी कैन से यू कैन टेक अ मॉक, राइट? तो आप उसको ऑलरेडी इन एडवांस प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज के लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। Yeah, so there is a question that what is capstone project in LMS, right? So here is a form, right? Scan this QR code, everyone. So this Yes. QR code is for you all, where you have to create a project, right? And you have to submit that project as well. सो अभी ये फॉर्म आपका उस चीज के लिए है। यू कैन क्रिएट योर टीम्स, यू कैन राइट द नेम्स ऑफ योर टीम अकॉर्डिंगली, एंड यू हैव टू वर्क विद द प्रोजेक्ट्स एज वेल। आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं, वो प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, एंड देन if your project is very much amazing, so you can get a chance to represent that specific project in event as well. We'll be not disclosing that event right now, but that is going to be a very big event. So start working with that, start creating the projects. I have already conveyed you that how to create the models, how to work with that, right? So if we were having the more of the classes, then I will be letting you know about more things. अगर और भी ज्यादा क्लासेस होती तो मैं और बहुत कुछ बताता है, या फिर अगर आने वाले टाइम पे भी होंगे तो आई विल लेट यू नो अबाउट दोस थिंग्स। बट जितना मैंने बताया है, according to that you can make some researches on based on that researches as well. You can create the projects, right? Yeah, I'm getting a hand raise. Yeah, you can speak right now if you want to say something. Yeah, Khushbu, you can say. Yes, so thank you so much, Gaurav, for sharing the details related to the project. So, Yeah, students, very good evening. As Gaurav has already given you, and he has talked about so much things. Now, at the end, we are expecting that you would be submitting a project related to what you have learned through us. So that's why we have shared this, QR code so that you'll be able to submit it. And definitely, for after completion of everything, you will be getting the certificate also. So, yeah. the journey has not yet completed. We are still left to complete the things, right? Now, over to you, Gaurav. Thank you so Sure, much. sure. Thank Yeah. you. Thank you, Khushbu. Okay, so it's the quiz time, everyone. You can scan the QR code and fill the form right now so that we'll be on the same page, right? So once you are done with that, please drop the done message in the chat box as well. And that for the link for that project will be also shared to your WhatsApp groups as well, right? So you can do that. Once done, please drop me a done message in the chat box so that me and you are on the same page. Okay, Shom says done, done, done. Is done. Gautam says done. Gautam says very well, classes, very nice. Okay, project submission date. So that is mentioned in that form itself. Let me check it once. The date is going to be in March itself. Okay, just allow me for a moment. Let me check. आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, जो फॉर्म ओपन करोगे, इन दैट फॉर्म ओनली you will see in the description there it is written for the specific date. Yeah, you can have a look over here. 5th March is the last date for the submission, right? 5th March is the last date of the for the submission of the project. So you have to create the projects accordingly, right? So everyone be prepared for that. Okay, done, 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 done. I have got multiple dones over here, right? Okay, so thank you everyone for joining the session. Now, if you have any questions, you can ask to me, right? Yeah, I'm looking over the chat box. Sorry for the chat bot chat box, right? But sir,
In March, our exams are there for the second semester. Abhi bana lo, Moksh. You can do it. The project is made of AI. Is this okay? Or we have to code for the project? No, it's not necessary to code for the project. You can move with the tools as well, right? You can go with the tools as well. Okay. Priyanshu is done. Okay. So if you don't have any questions, right? So should we move ahead? Okay. So thank you everyone. Thank you for joining the sessions. I hope that you enjoyed a lot, right? Yes, Gaurav, thank you so Uh, much. I hope students have enjoyed the session. Thank you, students, for your patience, your love. Okay. Thank you, Gaurav. Thank you. Have a nice day, everyone. Bye bye.